या शोहर को यूके में बुलाना चाहते हैं? क्या आप यूके के आला तालीमी इदारों में तालीम हासिल करना चाहते हैं? क्या आप यूरोपियन नेशनल हैं और अपने फैमिली मेंबर्स को यूके बुलाना चाहते हैं? क्या आप अपने वालिदैन को यूके में अपने साथ सेटल करना चाहते हैं? तो इन तमाम सवालात के जवाबात जानने के लिए देखते रहें यूके इमिग्रेशन लॉ विद जाहिद चौधरी। Good afternoon. Hello viewers, you are watching ZMC News Network. Today in this show we will discuss UK elections and situation in Pakistan. This program will be conducted in both language, in English and Urdu, because we have a lot of viewers from both sides. So I will try my best to use both languages so our viewer can listen and can understand in a convenient manner. As you are aware that 4th July we are having a general election in the United Kingdom. So obviously this is our chance to cast our vote in favor of whatever is our chosen party. But the most important thing is that we should vote for issues. Certainly, as an Asian community, we should understand the issues in a broader sense. We should not consider the benefit, the immigrations, and the other sort of things petty matters. We must understand and vote for those who actually represent our community's issues in the parliament. As you are aware, that's currently Conservative, Labour, Lib Dem, Reform, Green Party, and there are many other parties. They are actually conducting this election because you understand that this is actually a last weekend for campaigning. So every single candidate in their individual capacity and the parties are also putting their great efforts to convince voters that why the voters should vote for them. Obviously, as I told you this one, by the next weekend, we will have a new government in the United Kingdom. Everything in your hand now. So obviously, you have to listen to your conscience. You have to understand the needs of your children. We should consider the future of our children. Obviously, we live in this country. We work in this country. The matters in this country affect us. But as an Asians, Bangladeshi, Indians, and other, we also have our identity. So how we can actually protect our identity? Now, अगर आप देखें थोड़ा सा, मैंने जैसे पहले कहा था कि क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे व्यूअर्स जो हैं वो हमारे अपने
कम्युनिटी के लोग उसको देख रहे होते हैं. So I will try to actually conduct this program in both languages. So if you will see that what happened in Brexit, the entire Brexit was run on a basis of immigration. And in this election, in this present election, every single party is also making the immigration key facts to run their campaign. But as a lawyer, because I'm a lawyer, so I may say that these are all actually some sort of a smearing tactics to create a fear among the people. I just ask one question: whether our immigration figures gone down after the Brexit or gone up after the Brexit? Because the left campaigner at the time of Brexit, they said, okay, let we come out of the Europe and our immigration will come down. We will have a control our borders and that this, blah, blah, blah. But if you will see the current figures, that even after the Brexit, our immigration figures are gone up. So this means that immigration is not a key facts to run this campaign. Excuse me. I'm not blaming to a one single party. I'm blaming to every single, especially the main political parties, Labour, Conservative, Lib Dem. देखिए, बात यह है कि इमिग्रेशन के ऊपर पूरा इलेक्शन कैंपेन रन करना किसी भी सूरत में ये जो डेमोक्रेटिक नॉर्म्स होते हैं, जमहूरियत के जो असूल और प्रिंसिपल होते हैं, उसके अगेंस्ट जाता है. अब ऑब्वियसली if you will closely monitor the party's campaign, if you will see the Labour campaign, that's my suggestion, that's my understanding, my observation, that the Labour campaign, entire campaign is without any substance. They have not put forward any concrete plan that how they will run the country if they come into power. Similarly, if you will go to the conservative parties, they only have one plan, which Rishi is again and again, highlighting that, and that is Rwanda, because he knows that Keir Starmer is actually not having anything to rebuttal this. जो हमने 2-3 डिबेट देखी उसमें देखा कि ऋषि के इस सवाल के ऊपर कि जी लेबर बताए कि वो इमिग्रेंट के बारे में उसके पॉलिसी क्या है, तो उसके ऊपर क्योंकि लेबर हैज नो credible plan to control the immigration, so that's why Keir Starmer is actually struggling to answer this question. और ऋषि जो है उसको क्योंकि पता है, इसलिए वो बार-बार इस बात को जो है वो कर रहा है कि जनाब कि जी आप बताएं आप कैसे इमिग्रेशन को आप कंट्रोल करेंगे. Now, if we come to the third party, obviously Lib Dem, if you know the UK politics, you understand that in past
when obviously they were having their leader Nick Clegg, and they were having a coalition government, and Nick Clegg was a kind of a deputy prime minister. So they promised for student union, student fees, and these sort of things, but unfortunately, they have not actually fulfilled their promises. So there is a trust deficit. And then if we will come to the reform parties, if you will see the current race allegation, racist remarks against Rishi Sunak, we must, it's not like we are voting for Labour, we are voting for Conservative, we are voting for, we have to stand with the fundamental principle of our democracy. So we must condemn any kind of racial discrimination. Similarly, obviously, we also condemn Keir Starmer remarks against our brothers and sisters of Bangladeshi origin. So now this is actually now the election of our choice. एक जो बड़ा इम्पोर्टेंट इश्यूज जो इस वक्त हमारे सामने आ रहा है, स्पेशली हमारे जो एशियन और मुस्लिम्स जो कम्युनिटीज और जो वोटर्स हैं उनके सामने, obviously there are many independent candidates, although they are actually contesting these elections as an independent or from George Galway's parties or these sort of things. एक और जो चीज मैंने नोट की है कि देखें, ये मेरी ऑब्जर्वेशन है कि लेबर पार्टी जो है वो एशियन वोटर्स को एज ग्रांटेड लेती है कि जी ये तो हमारे साथ ही है ना जी, ये तो हमारे साथ ही है। लेकिन इस इलेक्शन में और फिर जो हमारे जो इंडिविजुअल कैंडिडेट्स भी हैं, अगर मैं मिडलैंड की बात करूंगा तो उन्होंने भी हमें एज ए ग्रांटेड जो है वो लेना शुरू कर दिया हुआ है। लोग जो हैं वो 5-5, 7-7 दफा जो हैं वो इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं एंड दे रिप्रेजेंट अस इन यूके पार्लियामेंट। लेकिन अगर आप उनसे कहें ना कि जनाब ये आप 7वीं दफा इलेक्शन लड़ रहे हैं या 6ठी दफा इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो फिंगर्स पे गिनवा दें कि आपने 7 काम कौन से किए हैं। They will be unable to reply to your answer, क्योंकि उनको पता है कि अच्छा जी they have no choice, कि एशियन कम्युनिटी विल वोट फॉर अस। ऐसा ना करें, आपका वोट जो है वो बहुत कॉस्टली है, ये आपके बच्चों के मुस्तकबिल को सामने रख के कास्ट होना चाहिए। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि जनाब पीपल शुड स्टार्ट टेकिंग यू एज ग्रांटेड। जब आप उनसे उनकी बात करते हैं कारकर्दगी की, तो दे हैव नथिंग टू से। या आप 5-5, 6-6 साल टर्म से आप जो है वो मेंबर हैं, लेकिन आपकी कारकर्दगी क्या है? What you have achieved, what you have done for the community? अब मुझे याद है कि पिछले जब हमारे इलेक्शन हुए थे तो जो हमारी कश्मीरी कम्युनिटी है उसने क्या किया था कि उसने
कुछ डेक्लरेशन बनाए थे कि जनाब जिसके ऊपर जो हमारे मेंबर पार्लियामेंट हैं उनसे साइन करवाए थे कि जनाब दे विल डू देयर पार्ट, दे विल प्ले देयर रोल फॉर कश्मीर इश्यूज। आज मैं उन बड़े बड़े जो कश्मीरी लीडर हैं, आई मे आस्क देम कि हैव यू अचीव्ड वट एवर दोज कैंडिडेट प्रॉमिस टू यू। क्योंकि आज मैं ये देखता हूं कि वो बड़े बड़े कश्मीरी लीडर फिर उन्हीं लीडरों के साथ जनाब खड़े हैं और उनके कैंपेन चल रहे हैं, हंसी मजाक हो रहा है। लेकिन इस कैंपेन में एक चीज जो हमारे सामने आई है कि अब एशियंस और दूसरी कम्युनिटीज के जो लोग हैं उनके अंदर बहुत अवेयरनेस हो गई है। और अब ये जो कैंडिडेट जिन्होंने हमें दे वर टेकिंग अस एज ग्रांटेड, उनको चैलेंज किया जा रहा है। जब वो जाते हैं अपने हलकों में तो लोग अब उनसे सवाल पूछते हैं। और ये इतनी बड़ी तादाद में इंडिपेंडेंट लोग जो सामने आ रहे हैं, ये इस बात की जो है वो एविडेंस है कि नाउ द पीपल विल नॉट लेट देम यूज देयर वोट एज ग्रांटेड। Certainly, if we, I was watching a one debate, Rishi and Keir Starmer's. One of the audience, one of the person from audience, asked this question: are you both are the only available options, are the best to represent our country? And I, as a lawyer, I also believe that Rishi has his own strength. Obviously, finance was his subject during pandemic. He done a fairly a good job. Keir Starmer from a legal background, and he was a good lawyer when he was working for Crown Prosecution Service. But question is whether they both are good enough to be the PM of a great United Kingdom. My personal opinion is also no. Both performance, both are performing really in a very mediocre way. But obviously, this is a democracy. You have to see what is available to choose. लेकिन ये याद रखिएगा कि ऐसा नहीं है कि जनाब आप सिर्फ वो जिसको हम कहते हैं ना उर्दू में कि भेड़ चाल, कि जनाब हाँ जी कम्युनिटी आप एक पलड़े में डाल दें बगैर सोचे समझे हुए कि इस कम्युनिटी की नीड्स क्या है, क्या उन नीड्स को फुलफिल किया जा रहा है, हमारी आइडेंटिटी के जो क्राइसिस हैं उनको क्या जो है वो एड्रेस किया जा रहा है। तो इस इलेक्शन में आप देख रहे हैं कि देयर आर मैनी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स, एंड इफ यू विल सी द रिजल्ट्स of a recent mayoral election, the independent candidates scored a huge number of votes.
which is actually a evidence that now the people are thinking differently. ये जो लोग 5-5, 6-6, 7-7 दफा हमारे रिप्रेजेंटेटिव बन के आ गए, कभी आपने उनसे पूछा? उनके तो ठीक है, उनकी जॉब लगी हुई है। हम तो पाकिस्तान को रोते हैं, यहाँ पे जनाब सारे मराद जो हैं वो ली जा रही हैं। और जब पूछो कि भाई अपनी कारकर्दगी दिखाओ, उंगल फिंगर टिप्स पे काउंट करके दिखाओ जी, तो दे आर अनएबल टू डू दैट। अपने आप को जनाब यू स्क्रैच माई बैक, आई स्क्रैच योर बैक, अपनी फैमिली को लोगों को नवाजा जा रहा है जनाब, किसी को पॉलिटिक्स में लाया जा रहा है, किसी को बेटी आ रही है, किसी का कोई भाई आ रहा है जनाब, किसी का कोई भतीजी आ रही है, किसी को भांजी आ रही है जनाब। सो व्हाई इज दिस? और ये सिर्फ हमारी कम्युनिटीज में ही क्यों है? सो 4th of July is a very important day for all of us. One important issue which I am thinking that also a key issues during these elections is Palestine. A Muslim voter think this issue is very close to their heart. So we have to understand, we have to ask our these representatives that what role they have actually played to get some sort of a ceasefires, or what they will do if they will be elected in next parliament to resolve this core issue of Palestine. So again similarly, जिस तरह से मैंने कहा कि हमारे वो जो कश्मीरी लीडरान हैं जिन्होंने के पिछले इलेक्शंस में जो है वो जनाब उनसे वो को डिक्लेरेशन साइन करवाए थे और वो करवाए थे, वो जरा आए लोगों के सामने। अब मैं उन बड़े बड़े जो कश्मीरी लीडर हैं उनका नाम नहीं लेना चाहता इस प्रोग्राम में, लेकिन अभी भी वही सारे लीडर जो हैं वो इन्हीं लीडरों के साथ खड़े हुए हैं। किसी में इतनी हिम्मत और जुर्रत नहीं है कि उनसे पूछ सके कि जनाब आप बताइए कि यू प्रॉमिस्ड दैट यू विल प्ले अ वाइटल रोल to resolve the issue of Kashmir or to highlight the issue of Kashmir. But nothing. Because you have your own motives. आपके अपने मफादात होते हैं जिसके तहत सिर्फ ये होता है हमारे अनफॉर्चुनेटली कश्मीरी ये जो लीडरान हैं वो बस पार्लियामेंट हाउस में जाके जनाब 2-4 मेंबरान को इकट्ठा करके वहां पे जनाब 2-4 एम्प्टी तकारीर जो है वो करके वो समझते हैं कि हमने कश्मीर इशू के लिए बहुत बड़ा काम कर लिया है जनाब। तो जब बात करें पूछें तो फिर नाराज हो जाते हैं। अब ये हमारी अपनी कम्युनिटी में ये एक वतीरा बन गया है कि व्हेन वी आस्क देम दिस सॉर्ट ऑफ अ क्वेश्चन तो नाराज हो जाते हैं, वो समझते हैं कि हम कोई उनको चैलेंज कर रहे हैं। वी आर नॉट चैलेंजिंग यू, वी आर सिंपली आस्किंग यू what you have done to resolve these issues which you have promised. You don't need to get cross or angry with us. आज की जो जनरेशन है ना वो हमारी जनरेशन नहीं है। हम आए थे तो हमें नहीं पता था चीजों का जनाब, और आप लोगों ने जो हमारे लीडरान हैं जो 7-7 दफा से इलेक्शन लड़ रहे हैं, 6-6 दफा से इलेक्शन लड़ रहे हैं, they taken us as granted. But our present generation
will not vote you without thinking and without using their brains. Believe me, this is a different sort of nation and generation. They will make you accountable for the things which you promise or which you will do. So, as I explained to you, that running this election campaign mainly on immigration is entirely incorrect. After Brexit, the number of migration gone up. So the people who claimed at that campaign, no, we will bring the immigration down and this one. What happened that? But no one is actually from all these. As I told you, this one they are making their empty. Labor campaign is also substanceless. Believe me, if you will see the Scotland, I simply say, obviously, is a part of Great United Kingdom. Because of aging population, they have no workforce to run NHS and the other services. Similarly, our NHS will cripple, will be on knees, will be on floor if we will ask these immigrants to go back. So the question is, what all these parties are promising to resolve this issue? Why you are not investing enough to prepare your domestic workforce, UK workforce? Why don't we have enough doctor? Why don't we have enough trained enough doctors in this country? Why don't we train enough nurses in this country? Why don't we train enough teacher in this country? Why we did not actually trained enough social worker in this country? Why? So who is going to invest? You talk about it कि जी इमिग्रेशन बड़ी हो गई है, जी इमिग्रेशन हो गई है, जी इमिग्रेशन हो गई है, इमिग्रेशन हो गई है. तो इसको रिजॉल्व करने के लिए कर क्या रहे हैं जी आप? अभी जो मैंने बात की कि कितने डॉक्टर आपने ट्रेन कर लिए, कितनी नर्सेज आपने ट्रेन कर ली, कितने सोशल वर्कर आपने ट्रेन कर लिए, कितने टीचर आपने ट्रेन कर लिए. अब कंजर्वेटिव कह रही है कि हम इसके ऊपर एक टेम्परेरी जो है वो कैप लगाएंगे कि अच्छा जी हर साल सिर्फ इतने लोग आ सकते हैं. It will not work. Simply, as when this Rwanda plan was, going through the different phases, even the Supreme Court actually gave a verdict and told Rishi Sunak government, look, Rwanda is not a safe country. And as a lawyer, I simply say that Rwanda policy is not workable. It's not workable. Saying thing is something different, but practicality is something different. And again, mark my word, Rwanda policy is not workable. Similarly, if someone is suggesting that they will put a temporary cap, it will not work. It will not resolve this problem, this issue. So now the question is, how we can bring down our waiting list in NHS, how we can improve our schools, our educations, our transport, other the issues which are very close to a common man.
Obviously, the cost of living is extremely high at the moment. People pockets are very squeezed. They have left with less money to spend, especially the family with kids. So these issues have not been discussed during this campaign, and in my observation, all parties run a very mediocre election campaign and only emphasize on the issues which are not very important or very close to the people's heart. So, obviously, again, my observation that as the polls suggesting that the Labour may win this election, but obviously, if the Labour win this election, the first thing which Keir Starmer has to do is to bring change. What do you think? He will be able to bring some change. You can record this, my program. You can save this one. No. Keir Starmer will not be able to make change to this Great Britain. Similarly, obviously, if you see the conservative parties, yes, Rachi some a policy regarding tax cut and other things, because that's the Rishi strength. So he knows that on that side what he can do that. And I have a fear. If Keir Starmer will unable to bring change, if he comes into power, then in that next general election, the voter may turn to the Reform Party, to Nigel Farage. So we should think about our future. And they're not talking about these sort of things. As the beginning, I explained it to you that I will talk about the situation in UK elections and some, but I think I took a longer time to discuss a UK election. Therefore, briefly, at the end of this part of the show, I will again suggest to all the communities that they should think about their issues before casting their votes. Communities should make their representative accountable. ये जो हमारे बड़े बड़े लीडर है ना, हमारी कम्युनिटी में जो लीडर बने हुए हैं, उनसे भी पूछा करें कि जी पिछले इलेक्शन में ये कहा था, इस इलेक्शन में आपके वो वादे कहां हुए. तो जब तक ये आप इनको काउंटेबल नहीं बनाएंगे, तो ये लोग इसी तरीके से फिर आपके नाम पे वोट लेंगे और फिर अपनी उनकी जो तन्हाई लगी हुई है, मराक लगी हुई है, उनको दे विल एंजॉय देयर प्रिविलेजेस. अब लेकिन मैं आई कैन फोरकास्ट दैट जिस तरीके से इस वक्त इंडिपेंडेंट कैंडिडेट बाहर आए हैं और खासतौर पर बड़ी तादाद में लॉ के फील्ड से तल्लुक रखने वाले बैरिस्टर सोलिसिटर जो है वो अभी इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं और दे आर चैलेंजिंग दीज पीपल हु आर टेकिंग अस एज ग्रांटेड. तो नेक्स्ट संडे को आप लोगों से मुलाकात तो जरूर होगी. ये संडे शो के नाम से ही प्रोग्राम जो है वो हुआ करेगा और मैं आपको इस प्रोग्राम में जो है वो
जो यूके, पाकिस्तान एंड अराउंड द ग्लोब जो भी इम्पोर्टेंट चीजें हुआ करेंगी उसके ऊपर जो है वो हम डिस्कस जो है वो किया करेंगे। नेक्स्ट प्रोग्राम से हम कोशिश करेंगे कि साथ कोई अपना रेलिवेंट गेस्ट जो है उसको भी जो है वो प्रोग्राम में ले। पाकिस्तान के हवाले से क्योंकि बजट पाकिस्तान में पास हो गया है, जो वहां पे महंगाई की सूरत हाल है, स्पेशली जो एनर्जी क्राइसिस है, जो इलेक्ट्रिक और गैस के बिल्स की वजह से जो लोगों में बेचैनी और परेशानी है, उसके ऊपर जो है वो नेक्स्ट प्रोग्राम में मैं सर्टेनली उसके ऊपर जो है वो बात करूंगा और कोशिश करेंगे कि कोई रेलिवेंट जो हमारा गेस्ट आ जाए उसको भी हम साथ लेंगे। फिर प्रोग्राम के आखिर में सिर्फ आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि ऑन 4th of July प्लीज कास्ट योर वोट वाइजली, listen to your conscience, okay, think about the issues which may affect our children in future. Gaza, Palestine, Kashmir, these are the issues which are affecting our communities, so we should think all about these issues before we cast election. Till next Sunday, Allah Hafiz, see you next Sunday. क्या आप यूके में विजिट वीजा पर आना चाहते हैं? क्या आप काम या बिजनेस के जरिए यूके की इकोनॉमी में हिस्सेदार बनना चाहते हैं? क्या आप अपनी बीवी या शोहर को यूके में बुलाना चाहते हैं? क्या आप यूके के आला तालीमी इदारों में तालीम हासिल करना चाहते हैं? क्या आप यूरोपियन नेशनल हैं और अपने फैमिली मेंबर्स को यूके बुलाना चाहते हैं? क्या आप अपने वालिदैन को यूके में अपने साथ सेटल करना चाहते हैं? तो इन तमाम सवालात के जवाबात जानने के लिए देखते रहें यूके इमिग्रेशन लॉ विद जाहिद।